So very good evening class. Today is the class of MCQ class number 24 of the UGC-NET paper 2 Mass Communication and Journalism. So here we will discuss some of the important questions of the year 2015 which has already been asked. So here we will start from the question number 204 which is very much important. Collateral category in the advertisement does not include. Everybody, collateral category in the ads does not include product brochures, B, catalogs, C, readership profile, D, trade show handouts. You have to know about collateral. What is collateral here? Collateral category in the advertisement which does not include what? Everybody will answer. Very important. Before timer, and please answer. No, it's not the C. It's the right answer. That is सॉरी यस सी जो है आपका राइट आंसर है सी जो है आपका क्या है राइट आंसर है वेरी गुड एब्सोल्युटली रीडरशिप प्रोफाइल इट डज नॉट इंक्लूड राइट कैटेगोरियल कैटेगरी जो एडवर्टीजमेंट होता है दैट इज यूज इन द मार्केटिंग कैन बी मेड अप ऑफ एनी मीडिया और द इंफॉर्मेशन कोलैटरल मींस कोलैटरल का मतलब साइड बाय साइड राइट which includes everything side by side. It means that collateral advertisement that used in the marketing can be made up of any media or the informations. This can include brochures, newspaper ads, website, banners, posters, stationery, right? Collateral advertisement used in the marketing can also include newsletters, blogs, promotional items such as samples of the product or the t-shirts with the company logo, right? That we very important. Please pay attention here. When we wear t-shirts having the brand logo, right? Generally what we do, we try to promote our brand with the t-shirts company's logo, right? That is printed on front of the t-shirt or the back of the t-shirts. That is what that mailings or the emails also. So anything that helps promote a product or the brand keeps the company product or the name in the forefront of the people's minds can be used as a मार्केटिंग कोलैटरल. इसी को हम मार्केटिंग कोलैटरल कहते हैं. लाइक द न्यूज़पेपर का हमारे घर अखबार आता है, आपके घर भी आता होगा. तो क्या होता है न्यूज़पेपर के साइड आपने देखा होगा कि लिफलेट्स भी रहता है, राइट? लिफलेट्स और द ब्रोशर्स दे प्रोवाइड यू अलोंग विद द newspaper. So this is what the side by collateral category in the advertisement what that is can be the product brochures, that can be the catalogs, that can be trade show handouts, right? Anything can be of the marketing. But this is not about the readership profile which comes under the collateral category in the advertisement, right? Yes, very good. So आपको याद रखना है collateral category in the advertisement क्या क्या include करता है. Okay, so if they will options like t-shirts with company logo, right? So this will also be which includes, right? ये भी include होगा, ये भी include होगा, ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, राइट? सो प्लीज जो है आप लोग ये सारी चीजें लाइक फॉर एग्जांपल आपका बैनर्स भी, राइट? ऑल द आइटम्स, द बैनर्स, द पोस्टर्स, न्यूज़लेटर्स, ये सारी चीजें आपका क्या होगा कोलैटरल कैटेगरी के अंदर ये सारे इंक्लूड्स होता है. ओके, चलिए क्लियर है टेंडल? इट इज क्लियर. समरीन, इट इज क्लियर टू यू? सो नेक्स्ट coming towards the question, that question number 205. Okay, to identify a brand in a series of the advertisements that are used: pre-heads, B, subheads, C, jump heads, D, label heads. Everybody answer. In order to identify a brand in a series of the advertisement, so right answer is that is, अगर आप लोगों ने मेल चिम्प यूज किया होगा, सब्जेक्ट इट इज रिलेटेड विद द सब्जेक्ट लाइन. नेक्स्ट राइट टू सब्जेक्ट लाइन. एवरीबॉडी आंसर इट. जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे. आई एम गिविंग यू द हिंट, राइट? गिविंग यू द हिंट विद द इमेजेस. सो आंसर इट. प्लीज फोकस ऑन द इमेज. इट इज ऑलरेडी इट इज. एवरीबॉडी, टू आइडेंटिफाई अ ब्रांड इन अ सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट दैट्स आर यूज्ड. नो. यस, वेरी गुड. दैट द राइट आंसर. बहुत ही सुंदर. ए जो है आपका राइट आंसर होगा. इट्स नॉट द बी. ए इज द राइट आंसर, नॉट द बी. ओके,
ओके, प्री हेड जो है आपका राइट आंसर है, प्लीज फोकस इट। आप यहां पे देखेंगे, राइट, दैट इज द सब्जेक्ट लाइन, इट इज राइट। आप अपनी इनबॉक्स में आज चेक करेंगे, राइट, अपनी इनबॉक्स में आप लोग देखिएगा सब्जेक्ट लाइन क्या होता है, प्री हेडर टेक्स्ट क्या होता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट टू सब्जेक्ट लाइन, इट इज कॉल्ड एज प्री हेडर टेक्स्ट, राइट, in the Gmail. So in the identifying a brand in the series of the advertisements, what does are used, that is pre-head. So pre-header is the text to the right of the subject line that gives a brief preview of the email, right? Brief preview of the email की email के अंदर क्या है वो सारी चीजें आपका एक short preview आपको show करता है यहाँ पे, that is what the pre-header, right? So pre-header text is also written like the subject line, okay? So a good pre-header can draw attention and the convince people to open your emails just like a catchy subject line can, okay? ये भी आपका attention drawing, ठीक है, और convincing टाइप में और persuading टाइप में आपका क्या होना चाहिए, कैची होना चाहिए सारे प्री हेडर्स, राइट। आपके वर्ड जब भी आप प्री हेडर लिखते हैं वो आपका क्या होना चाहिए, कैची होना चाहिए, अ गुड प्री हेडर which will draw attention and convince people to open your email just like a catchy subject line, okay? So this is what about the pre-header, right? So this is also important in order to identify a brand, right? In order to identify the email, right? आपको एक अच्छा ब्रांड अगर आपको प्रमोट करना है, ठीक है, अगर आप मार्केटिंग में अगर आपका मार्केटिंग में कोई भी प्रोडक्ट के बारे में अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और उसको आपको ब्रांड कस्टमर्स तक आपको लेकर जाना है, तो आपको प्री हेडर भी आपके ईमेल एडवर्टीजमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरत है, राइट। ईमेल एडवर्टीजमेंट के अंदर दैट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू राइट अ कैची प्री हेडर और ऑल्सो द कैची subject line, okay? So this is what here important about the pre-heads, okay? It is all clear. 206 questions. If bipolar attitudes are used in a scale, it is known as, कौन सा scale बोलेंगे? Okay, you have a doubt in the summary? Yes, ask your doubts and answer these questions as well, okay? If bipolar attitudes are used in a scale, it is known as what? Everybody without options answer it. Bipolar attitudes कौन सा scale के अंदर होता है और उसे हम क्या कहते हैं? What is it is known as? Yes, very good. Tyndall has answered. That is, if bipolar attitudes are used in a scale, it is known as semantic differential scale. Okay, very good. चलिए, तो options are Gutman scaling, Thurston measuring methods, C semantic differential, and D Likert scale. Very important. We have already answered, but meanwhile, please go through all the options and answer it, those who have not answered yet. If bipolar attitudes are used in a scale, it is known as. चलिए, Samrin, can we explain in the last? हम लास्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके? चलिए, if bipolar attitudes are used in a scale, it is known as semantic differential scale, okay? Very good. Semantic differential scale होता है जिसमें bipolar attitude होता है, right? So this is what, like for an example here it is given like the happy, और दूसरे साइड में आपका क्या है, सैड। आपको हैप्पीनेस से लेकर साइड के बीच में आपको क्या करनी है, आपको बताना है, पॉइंट करना है, राइट? लाइक यस, टू एक्सट्रीम ऑप्शंस, यस इट इज गिवन लाइक हैप्पी एंड सैड, ब्राइट एंड डार्क, ठीक है? इस तरीके से आपका टू पोलर, बाइपोलर आपका एटीट्यूड्स रहेगा, राइट? बाइपोलर मींस टू, वन पोल एंड north pole and south pole, okay? In this way it is that bipolar attitudes are used in a scale which is known as semantic differential scale, okay? What is about the Gutman scale, what is about the Thurstone scale and the Likert scale, okay? So let's understand each of the scale. We have already read in the chapters classes, ठीक है? chapters classes में हमने पढ़ा है ये सारी skills. So Likert scale will provide you with the participant agreement or the disagreement with the आस्क्ड स्टेटमेंट्स, राइट? आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे आप एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं,
ये आपको बताना है, राइट? लाइक इन द क्वेश्चनर वी यूज टू डू, राइट? हम क्वेश्चनर में 5 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल, 3 पॉइंट स्केल दैट वी टेक, दैट इज व्हाट अबाउट द एग्री डिसएग्री, ये हमें सारी चीजें उसमें मेंशन करते हैं. दैट इज व्हाट अबाउट द लिकर्ट स्केल, दैट यूजर्स और द पार्टिसिपेंट विल एग्री विद द योर आस्क स्टेटमेंट्स और डिसएग्री विद योर आस्क स्टेटमेंट्स. वी हैव डिस्कस्ड थर्स्टन स्केल, राइट? So यहाँ पे देखेंगे Thurston scale, that is a method to use to measure the quantify the opinions or the attitudes of the people being surveyed using a format of the agree and disagree questions. Here is also about the agree and disagree, but what the difference between them? Agree and disagree इसमें भी होता है, right? Agree and disagree questions are there, but the difference it is that in the Thurston measuring methods, the agree and disagree statements are assigned a numerical value by the research before बिगनिंग. ओके, इसमें आपका क्या होता है, एग्री के लिए आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, आपको इस तरीके से आपका इट इज असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट यू हैव टू गो थ्रू, राइट? लेकिन वहीं पे लिकर्ट स्केल में आपको एग्री डिसएग्री करना होता है स्टेटमेंट के साथ, लेकिन थर्स्टन में आपको इट इज असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट? एग्री एंड डिसएग्री. ऑल क्लियर? आपने थर्स्टन में आपने ये देखा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल, yes, this is can be like the 1 2 3 4 5 6, और ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है, और सभी का इस जस्ट लाइक द एंग्री, राइट? एंग्री बहुत रेड फेस है, एंग्री रेड फेस, थोड़ा सा लाइट रेड, यस, अगेन लाइट रेड, अगेन लाइट रेड, एंड दिस इज व्हाट द ग्रीन हैप्पी. ठीक है, दैट व्हाट यू रेट और रिव्यूज लाइक वेरी गुड, आप रिव्यू देते हो उस तरीके से, राइट? यू वेरी गुड. लिकर्ट यूजुअली हैज द 5 क्वेश्चंस एंड थर्स्टन हैज 11. यस, एग्जैक्टली. तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप मेजर करते हो अपनी रेटिंग्स को. सो व्हाट अबाउट द गटमैन स्केलिंग? Gutman, it is also known as cumulative scale, which measures how much of a positive or the negative attitude a person has towards a particular topic, right? Yes and no. आपको एक स्टेटमेंट दिया है, right? The statement is given, and here, yes, you have to agree, and yes and no, that is two things that agree or the disagree or the yes or the no, right? Only the two things that you have to agree with or disagree with. This is what about that simply it measures how much of a positive or the negative attitude a person has towards a particular topic, right? Plus and minus. So this is all about the different skills that you have to know. Okay, it is all clear. Now questions number 207. Control variables is used to remove. Control variables का हम प्रयोग करते हैं किस चीज के लिए? What the control variables is used to remove? Here the options are non-spurious relationship, B, inference, C, conceptual clarity, D, unwanted influence. Everybody, very important about the control variable. Yes, got the answers? चलिए, absolutely. So D is the right answer. Everybody has answered correctly. So this is what that is unwanted influence, right? So control variable is used to remove the unwanted influence. Here explanations you read. A control variable is anything that is held constant. You have to remember that control variable is the constant, and right, or it is limited in the research study. It is variable that is not of the interest to the study aims, but it is controlled because it could influence the outcomes. ये outcomes को influence कर सकता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम, controlled करके रखे जाते हैं, right? For an example, we have also mentioned this example in when we are reading the chapters. क्लासेस में हम जब पढ़ रहे थे उसमें हमने ये एग्जांपल भी दिया था. इन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, द टेम्परेचर कैन बी क्लासिफाइड एज कंट्रोल वेरिएबल, राइट? राइट, when you are observing the growth of a plant, right, that the temperature it is, temperature जो है आपका क्या है,
controlled variable, it is classified as controlled variable if it is controlled during an experiment, right? So other examples of the control variable could be like the amount of light, हो सकता है, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट हो सकता है, अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है, पॉट ऑफ द प्लांट भी हो सकता है. ओके, सो दिस ऑल आर द कंट्रोल वेरिएबल्स दैट वी राइट दैट वी यूज टू रिमूव द अनवांटेड इन्फ्लुएंस. ओके, ये सारी चीजें भी हमें कंट्रोल करनी पड़ती है. लाइट को, लाइट के अमाउंट से हमारा आउटकम इन्फ्लुएंस हो सकता है, ज्यादा लाइट, कम लाइट. एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन से भी हमारे आउटकम्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, अमाउंट ऑफ वाटर से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, और पॉट ऑफ द प्लांट से भी हमारा इम्पैक्ट पड़ सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है हमारे ग्रोथ ऑफ द प्लांट का, राइट? सो दैट इट इज व्हाट दैट कंट्रोल्ड वेरिएबल्स इट इज यूज्ड टू रिमूव द unwanted influence. Okay, so that we control the variables, right? And control variable is used with the independent and dependent variable. Okay, remember it. Generally we use in an experimental research. Experimental research में हम इसको control variables को हम use करते हैं in order to remove the unwanted influence, right? It is all clear? Next, 208. Androcentric view of cinema is a androcentric view of a cinema is a what? Male perspective, B female view, C view of the underdog, and D French genre. Everybody, androcentric view of the cinema. What is androcentric view of the cinema? Everybody answer. This is a terminology which used in the cinemas. Yes, absolutely. Everybody has answered correctly. So this is what the answer it is, that male perspective, right? Male perspective is your answer. Androcentric view of the cinema is a male perspective. Okay, so male gaze jaldi se batayenge. Male gaze, the concept of male gaze that we read in which theory? कौन से सिनेमा की कौन सी थ्योरी में हम मेल गेज को पढ़ते हैं? एवरीबॉडी, यस, दैट इज व्हाट द फेमिनिस्ट थ्योरी, राइट? वेरी गुड. इन द फेमिनिस्ट थ्योरी वी रेड द मेल गेज. यस, एंड हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल गेज? यस, लॉरा मॉलविए. ओके, वेरी गुड. चलिए, सो एंड्रोसेंट्रिक व्यू जो है आपका क्या है? इट इज अ टर्म दैट रेफर्स टू अ मैन बीइंग प्लेस्ड एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्ल्ड, फेवरिंग देयर जेंडर एंड लिमिटिंग द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वुमेन, राइट? अगर आप सिनेमा में जाएंगे, देखेंगे वहां पर, तो डायरेक्टर हो या फिर सिनेमाटोग्राफर हो या फिर लाइटमैन हो, ठीक है, लाइटिंग या गैफर जिसको बोलते हो आप, राइट? और ये तो आउटसाइड हम प्रोडक्शन फेज से आपको बता रहे हैं. और या फिर आप कास्टिंग व्यू से आप देखेंगे तो वहां पर मेल का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इन कंपैरिजन ऑफ द फीमेल है, राइट? दिस इज व्हाट अबाउट दैट इट इज कंसीडर्ड एज द सिनेमा में जो काम करने वाले लोग हैं वो मेल ही ज्यादा होते हैं. दिस इज व्हाट द एंड्रोसेंट्रिक व्यू ऑफ द सिनेमा इज अ मेल पर्सपेक्टिव, राइट? सिर्फ मेल ही काम करते हैं. दिस इज व्हाट अबाउट दैट एंड्रोसेंट्रिक व्यू ऑफ द सिनेमा, राइट? और हमने जो हमारा मेल गेज है, यस, रचना हैज शेयर्ड अ वंडरफुल पॉइंट्स हियर, दैट इज एंड्रोसेंट्रिक जो है, हम क्या बोलते हैं? एंड्रोसेंट्रिक, इट इज मेल पर्सपेक्टिव. वेरी गुड, इट इज कंसिडर्ड एज मेल पर्सपेक्टिव. वहीं पे अगर हम गायनोसेंट्रिक अगर बात करेंगे, दैट इज फीमेल पर्सपेक्टिव, राइट? These all are the two perspective that it is known as androcentric and this is gynocentric, right? It is all clear? Very good. चलिए, बहुत ही सुंदर. It is all clear, everybody? So the male gaze that invokes the sexual desire in a man while looking at the woman, which makes the man a looker and the woman an object to be looked at and admired. This is what about the male gaze, which was discussed in the feminist theory by the film theorist or the scholar Laura Mulvey, right?
So that Laura Mulvey was the first one who introduced the concept of the male gaze, right? Chaliye, next 209. If qualitative and quantitative techniques are both combined to understand a research problem, it is known as what? क्या बोलते हैं? चलिए, सोशियोग्राम, बी बाइनरी मेथड, सी इवैल्यूएशन, डी ट्रायंगुलेशन. यस, क्या बात है. If qualitative and quantitative techniques, both of the techniques are combined together to understand a research problem, it is known as what? Very good. That's the right answer. Everybody has answered correctly. Triangulation is the right answer. Triangulation का मतलब होता है triangulation which refers to the use of the multiple methods or multiple data sources in the qualitative research to develop the comprehensive understanding of a phenomena. Not only the qualitative research as well as also the quantitative research also, right? So triangulation is often used in studies that combine both of the method, that is quantitative and qualitative approaches, and it is sometimes referred to as also mixed method, right? इसको कभी कभी हम mixed method और मल्टी मेथड रिसर्च भी बोलते हैं, राइट? मल्टी मेथड रिसर्च. So data triangulation is where the researcher uses two or more methods for the verification of the findings and the result, right? That way we call it as an triangulation or the data triangulations, right? And where the researcher uses both of the methods, either qualitative, both of the methods means qualitative and quantitative techniques for the verification of the findings and the results. Okay, it is all clear that triangulation is very much important, right? So whenever triangulation words come, understand the both of the quantitative and qualitative techniques, right? Basically they both are used to understand a research problem. Chaliye, next 210. Ambush interview contains, everybody, ambush interview contains what? Ambivalent questions, B direct questions, C simple question, D hidden questions. Ambush interview. Very good. चलिए, so ambush interview जो होता है, that is hidden question, that contains the hidden questions. Okay, like here, an interview that has not been pre-arranged, right? उसको हम pre-arranged नहीं करते, not pre-arranged, right? It is like the sudden. Okay, so this is an interview that has not been pre-arranged, whose purpose is to catch the interview off guard, right? In an ambush interview, he was asked what he will do now, right? This is what about the ambush interview, that is hidden question. It is not told to interview, right? ये प्री अरेंज्ड क्वेश्चंस नहीं होता है कि हम आपसे ये सवाल पूछने वाले, आपसे अपने पहले से अपने क्वेश्चन तैयार रखे हुए हैं. एंड इंटरव्यू एंड इंटरव्यू दोनों जो है आपको, यस, वेरी गुड. लाइक फॉर एग्जांपल द पॉक्स पॉप आल्सो, ठीक है, आप बोल सकते हो, बट प्रॉपरली वो एम्बुश इंटरव्यू में नहीं आएगा, राइट? जो आपका लाइक फॉर एग्जांपल जो आपका इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हम एम्बुश इंटरव्यू का यूज करते हैं, राइट? In a investigative journalism, right? So that ambush interview is generally used, that too, that are hidden questions are there, right? So that we use, right? That all are the not the pre-arranged but sudden questions, okay, or the hidden questions, on the spot questions, right? Very good, spot questions you can say. 211. While administrative research investigates the reactions of the readers of a newspaper content, the critical research usually investigates what? यहां पे आपको दो चीजें बताया गया है, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च एंड दूसरा क्रिटिकल रिसर्च.
Okay, the two things are here, that administrative research and critical research. Here it is saying that administrative research investigates the reactions of the readers of a newspaper content. Okay, it's about the audience, it's about the readers. Here it is asking about the critical research usually investigates what. So options are the size of the paper, B, the layout and color, C, the font size, and D, the ownership and control. Critical research. Yes. Very good. So this is what the D. D आपका right answer है. Okay. So remember, always remember, in the print media के अंदर, in the प्रिंट मीडिया के अगर रिसर्च की बात करेंगे, इन द रिसर्च, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च which generally investigates the reactions, right, that what they like the content or not. ठीक है, ऑडियंस की जितनी रिएक्शन न्यूज़पेपर कंटेंट से लेकर रीडर्स की रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं, लाइक द सर्वे, राइट. ये टोटली जो है आपका सर्वे हो जाएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च. लाइक द मेन पॉइंट ऑफ द रिसर्च, इट इज बेसिकली दैट इज टू इन्वेस्टिगेट द रिएक्शंस ऑफ द readers of the newspaper content. Second, it is about the critical research, right, which usually investigates the ownership and the control, right, the newspaper ownership and as well as the control. So this is what about the critical research that critically investigates the ownership and control of the newspaper. It is all clear. So आपसे questions को alter भी किया जा सकता है, right. They can say like the यहाँ पे आपका critical बता दे, right. The critical research investigates, ये आपको यहाँ पर, right, they can change and they will say that it is ownership and control of newspaper, whereas administrative research usually investigates what, that will be the answer of the, क्या होगा आंसर, that is reactions of the readers of a newspaper content. Okay, yes, the content of the newspaper from the readers. Okay, yes, वेरी गुड. तब हम कंटेंट की बात करेंगे. चलिए, सो ये आपका क्वेश्चन था. नाउ टेल मी अबाउट द डाउट. क्या समरीन का डाउट था? दैट एग्जांपल. ओके, नाउ कमिंग टू द दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू वर हैविंग द डाउट. ओके, चलिए. यस, ये क्वेश्चन था आपका, टू आइडेंटिफाई अ ब्रांड इन द सीरीज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट दैट्स आर यूज्ड, राइट. सो दैट यू वर आस्किंग फॉर द एग्जांपल. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, राइट, आई एम गोइंग टू लॉन्च अ प्रोडक्ट ऑफ द क्रैश कोर्स, राइट, क्रैश कोर्स नेट जेआरएफ. ओके, so this is what that it will be in a, right, I have the data of the participants, right, or the downloaded app, those who have downloaded the applications, that I have the data. I will mail all the participants or the स्टूडेंट्स, राइट, सारे स्टूडेंट्स को हमें मेल करना है. ये एडवर्टीजमेंट है, राइट, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं और प्रोडक्ट उन तक एडवर्टीजमेंट पहुंचना है. तो व्हाट वी विल डू, राइट, we will write the subject line first, right, we will write the subject line first like the crash course mass communications. Okay, so this is what the subject line, ये हमारा क्या होगा, subject line होगा, right. And what will be the our pre-heads क्या होगा, what about the pre-heads? जल्दी से सभी लोग एक pre-heads बनाइए, that will be beneficial for us, right. चलिए, pre-heads. Yes, I will give the discount, right, 50% discount in the crash course in mass communication and crack JRF in 2022. This is what about, yes, 50% in the net JRF.
Yes, this is what the pre-heads. Yes, learn from the right experts also. Very good. ये भी हमारा क्या है? Learn from the right experts. Okay. This is the pre-heads. This will be pre-heads, right? ये आपका यहाँ पर आपका this is what the pre-heads, the pre-header takes it will be. और ये आपका subject line होगा crash course mass communication simple. Okay. It is clear सिमरन? Yes. Very good. That is लक्ष्य आपका साथ हमारा. Thank you for your all kind support. चलिए, ये सारी चीजें आपका क्या है? प्री हेडर है और साथ ही साथ सब्जेक्ट लाइन है. ओके, सो चलिए अब समराइजेशन में आते हैं. राइट, एवरीबॉडी नाउ द समराइजेशन पार्ट. ओके, नो इशू, नो इशू. व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द टर्मिनोलॉजी दैट इज यस प्री हेड्स. ओके, सेकेंड दैट इज कोलैटरल category in the advertisement. Okay, collateral category in the advertisement that we understand. Yes, very good. Also the different scale, semantic differential scale and the Gutman scale. Yes, very good. That is bipolar. Next we discussed about the control variable. Very good. कंट्रोल वेरिएबल को लेकर हमने डिस्कस किया था मिक्स में एंड्रोसेंट्रिक. यस, एंड्रोसेंट्रिक. यस, वेरी गुड. और गायनोसेंट्रिक भी हमने यूज किया. यस, एम्बुस इंटरव्यू, दैट इज हिडन क्वेश्चन. एवरीबॉडी, यस, हमने प्रिंट मीडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च एंड क्रिटिकल रिसर्च. यस, administrative research and critical research, that both we talked. Okay, that administrative research, it generally investigates about the content of the newspaper from the readers, and critical research, that it is about the ownership and control of the newspaper. Okay, yes, also that we have discussed about the triangulations, right? That is basically the mixed method research also it is known as, and that we use and quantitative and qualitative research, both of the techniques to understand a research problem. Okay, that we known as or consider that it is an triangulations. Okay, yes, also known as multi-method. Yes, very good. Multi-method and mixed method भी. Very good. So this is all about that we had discussed, right? So please आप लोग notes बनाइए, proper तरीके से notes बनाएंगे.